डीएनए टेस्ट हो गया क्या मिस्टर गुप्ता? Are You you? are not supposed to take name of the complainant. The intercourse took place only because there was a false marriage promise or something. और मनीष यादव के खिलाफ बलात्कार करने, जान से मारने, This lady actually is in habit of blackmailing people. इसी वर्ष 2023 के वैलेंटाइन डे के बाद मैं गर्भवती हो गई। चूंकि मनीष यादव पुलिस थाना निशातपुरा में पदस्थ हैं, trying to play a game of honey trap. मनीष यादव मुझसे बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कुछ नई चीज बताइए। मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा। मैं उसकी बातों में आ गई, जिसके बाद मनीष यादव ने कई बार मेरे साथ संबंध बना कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम्हारा धर्म अलग है और मेरा धर्म अलग है, मैं हिंदू हूँ, तुम मुस्लिम हो। हाँ, यस मिस्टर गुप्ता। Lord, am I audible to your lordships? जी प्लीज। It's an anticipatory bail application. यस। I filed the FIR along with my application at page 22, if your lordship may see, section A2. जी। Lord may then turn to page 25 where the contents of the application submitted are there, Lord. जी। Lord, may I just read from from line number 12 from bottom. जी। The sentence starts with the Gaya. Gaya, after that, Nakal Avedan Shabd Shah. जी। मिलॉर्ड, नकल आवेदन शब्दशाह लेख है प्रति श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना निशातपुरा भोपाल, विषय मनीष यादव प्रधान आरक्षक द्वारा बलात्कार किए जाने बाबत शिकायत आवेदन पर। Mr. Gupta, Are you you? are not supposed to take name of the complainant. No, no, it's not a case of POXO actually. It is yet you are supposed to maintain the privacy. Very well. I'm sorry. सलीम, पता सो एंड सो निवास करती हूँ। लगभग 7 वर्ष पहले मेरी जान पहचान मनीष यादव से हुई थी तथा मनीष यादव से विगत 7 वर्षों से रिलेशनशिप में हूँ। सर केस दैट शी इज इन रिलेशनशिप विद दिस मैन। इस दौरान लगभग आज से 10-12 दिन पहले मैंने मनीष यादव से कहा कि मैं 1.5 माह की प्रेग्नेंट हूँ तथा मनीष यादव से कहा कि अब शादी कर लेते हैं, तो मनीष यादव द्वारा मेरे साथ मारपीट की तथा गर्भ गिराने के लिए कहा। चूंकि मनीष यादव पुलिस थाना निशातपुरा में पदस्थ हैं तथा पुलिस की धमकी देता रहता है, इस कारण डर के मारे मैंने करा ली। कल दिनांक को मैंने पुनः मनीष यादव से शादी करने के लिए कहा तो मनीष यादव ने मेरे साथ मारपीट की, मेरे से गले में चोट आई, मेरा गला दबाकर मारने की कोशिश करी। मनीष यादव का भाई योगेश यादव मुझे धमकी दे रहा है। दैट्स ऑल। So, my lord, it is a pure case of consent where she herself says that she is in a relationship for last more than 7 years. And never ever, she does not even say that the intercourse took place only because there was a false marriage promise or something. डीएनए टेस्ट हो गया क्या? सर डीएनए टेस्ट तो अभी नहीं हुआ होगा। अब तो हो जाए, उसके बाद देखेंगे इसको। तो मिलॉर्ड अभी तो एंटीसिपेटरी बेल है ये। हाँ हाँ, तो सैंपल वगैरह दीजिए अपना, फिर देखते हैं। जी ठीक है, तो आप इसको आफ्टर वेकेशन रख लें, फिर हम देख लेते हैं। देखिएगा। श्री अजय गुप्ता प्रेस फॉर टाइम टू wait for DNA report. In as much as per the complainant, she was pregnant with the present applicant and was having fetus of 1.5 months in her stomach, and she was carrying a fetus of 1.5 months when the report was lodged on 12/4/2023. I'm sorry, Milord, just to correct, she had undergone DNC much before the FIR was lodged. Okay, कहाँ आएगा ये? Milord, it is there. गर्भ गिराने के लिए कहा, चूंकि सोवेंसो में था इसलिए मैंने करा ली। इधर आगे पढ़िएगा पेज 26 पे। जी। अतः मनीष यादव के खिलाफ बलात्कार करने, जान से मारने एवं डीएनसी कराने के संबंध में कार्रवाई करने का। डीएनसी पहले ही हो चुकी है। हटा दीजिए जी, ठीक है। और बताइए जी। तो सर केस हमारा तो इतना ही है कि वैसे डीएनए की अभी कोई ऐसी स्थिति है नहीं। हाँ नहीं, डीएनए जब डीएनसी हो गई तो डीएनए कहाँ से आएगा? जी जी जी। तो सर हमारा इतना ही केस है कि इट्स अ केस ऑफ कंसेंट एट बेस्ट। नाउ वी वांट टू टेल द मिलॉर्ड योर लॉर्डशिप दैट this lady actually is in habit of milord blackmailing people. Earlier also she has lodged reports against people that I have filed at annexure A3 milord at page 28 if your lordship may see. जी। That was also a report under 354, 341, 294 छेड़छाड़ की report.
Then police, this is the FIR, which is, my lord, up to page 31. जी, From page 32, my lord, will see that it was a final report जी, filed by police of Tila Jamalpura police station, जी, and it was found that this report is false. Your lordship will see at page 38. लास्ट ओपनिंग इस तरह पूर्व में पंजीबद्ध प्रकरण की रंजिश के कारण फरियादिया सो एंड सो, आई विल नॉट टेक द नेम एज अ लॉर्डशिप सेड, जी, द्वारा आरोपी आदिल खान आबिद खान के विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। अभी तक जांच पर से मामला झूठा पाए जाने से प्रकरण सदर में खारिज करता करने अनुमति हेतु डायरी एवं में प्रतिवेदन पुलिस आयुक्त को भेजा जाता है। मतलब द एप्लीकेंट इज अ मैरिड मैन, he knew that he is a married man, he has children. This lady makes a false allegation and is not trying to play a game of honey trap. yes, And she herself says that I am in relationship with this man for 7 years. He never reported the matter. She's major. Absolutely no question at all of rape. जी, जी, yes, Malord, as for the 164 statement, my allegation now the Malord present applicant, Malord, जी, and the 164, Malord, स्पेसिफिक सेड, मैलॉर्ड, बताइए। केस के दौरान हमारी काजी कैंप में अपने परिवार के साथ रहती थी, जहां एक केस के दौरान आप हमारी आपस में जान पहचान हो गई, हमारा मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो गया, उसके बाद आपस में फोन पे बातचीत होने लगी। कुछ दिन बाद मनीष यादव मुझसे बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करूंगा। तब मुझे पता चला कि मनीष यादव शादीशुदा है। मैंने उसको बोला कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा। मैं उसकी बातों में आ गई, जिसका फायदा उठाकर 2016 में मेरे साथ सबसे पहले हनुमानगंज थाने के जस्ट सामने स्थित होटल भोपाल पैलेस में बुलाया। वहां भी अपनी बातों फंसाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। मतलब ही इज ऑलरेडी मैरिड मैन, मालूम। जी, जी, Lord, may I just submit to this answer, Lord? I am thankful. let him complete, please. Let him complete. उसके बाद मनीष यादव ने कई बार मेरे साथ संबंध बनाए। मैं 4 महीने की गर्भवती हो गई थी। उस समय मेरा बच्चा ट्यूब में फंस गया था और डॉक्टर को मेरा ऑपरेशन करना पड़ा था। सो मतलब ही इज अ मैरिड मैन, मतलब उसकी फिर डीएनए जांच कराई नहीं कराई? नो, मतलब डीएनए नहीं हुआ, मतलब इसमें एफएसएल रिपोर्ट गई है, मतलब 24/4 को, मतलब। हाँ, नहीं, ये जो बच्चा जो उसका डीएनसी कराया उसकी वो नहीं हुई, मतलब उसमें हाँ, एफएसएल बस गई है, मतलब इसमें। yes, May I, Lord? My lord, I am for the complainant, my lord. My lord, as per the allegation of the my lord victim, my lord, applicant is already been married by तो हो गया। suppressing डोंट this fact. रिपीट, कुछ नई चीज बताइए। My lord, he forcefully terminated the pregnancy. Lord, उसका डीएनए क्यों नहीं कराया आपने? कहाँ है? Yes, order on merits. देखिएगा, श्री अजय गुप्ता, learned counsel for the applicant Manish Yadav. This is first application on behalf of the applicant under section 438 CRPC. Next pair. His crime number 229 of 2023 is registered at police station Hanumanganj, Bhopal for offence under section 376, 376 within bracket 2 another bracket and 323, 506, 34 IPC. Full stop. It is submitted that FIR was lodged on 12/4/2023. Full stop. Incident allegedly took place starting from 2016. Full stop. It is submitted that after 7 years, FIR was lodged. Prosecutrix always knew that applicant was a married person. Since he is a police personnel, he is being blackmailed. Full stop. Earlier, complainant prosecutrix had lodged case crime number 0334 of 2021 at police station Tila Jamalpura under section 354, 341, 294, 323, 506, 34 IPC against 2 other persons. Full stop. In this case, final report was submitted by the police declaring the case to be a false and concocted one. Full stop. Placing reliance on this material, it is submitted that
prosecutrix is in habit of making false allegations. Full stop. Placing reliance on next paragraph. Placing reliance on the judgment of Honorable Supreme Court in Naeem Ahmed versus State within bracket NCT of Delhi bracket close 2023 SCC online SC 89 and reading from paragraph 20 and 21, it is pointed out that Honorable Supreme Court has made a distinction between giving a false promise and committing breach of promise by the accused and case of breach of promise. Full stop. It is submitted that in the case of false promise, the accused from the beginning will have, right from the beginning, would not have any intention to marry the prosecutrix. Whereas in case of breach of promise, one cannot deny the possibility that the accused might have given a promise with all seriousness to marry her and subsequently might have encountered certain circumstances unforeseen by him or the circumstances beyond his control, which prevented him to fulfill his promise. Next paragraph. Reading from the said judgment, it is submitted that since prosecutrix knew that applicant was married, there is no question of any false promise, and therefore it's a case of consent. Thus, applicant is entitled to grant of anticipatory bail, looking to the fact that he is a police officer. ऊपर लिखिएगा श्री अजय गुप्ता, senior advocate, through video conferencing, assisted by श्री राजीव मिश्रा, present in person. ठीक है ना? इन लोगों का नाम डाल लीजिएगा. Next para. श्री विवेक लखेरा, learned government advocate, in his turn submits that case is slightly different. It is not that the prosecutrix knew from the beginning that applicant is married. Full stop. Applicant was exploiting her since 2016 in the name of marriage. They were in relationship. When prosecutrix became pregnant, then she asked the applicant to marry her. When applicant forced her to undergo abortion, and that is the time when she came to know of the fact that applicant is already married. Reading from 164 statements, 164 CRPC statements that is submitted, that prosecutrix has supported the case of the prosecution and has given statements against the applicant. Full stop. Shri Dharmendra Patel also submits that it is not a case of breach of promise, but that of a false promise, as prosecutrix was not knowing the status of the applicant to be a married man from the beginning. She discovered it later on when applicant had promised her to divorce his wife and continued to indulge in relationship. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the records. Full stop. Facts They just, Muhammad they just are- say one thing, Mullah. Huh? I think she knew from the starting that he was married. हाँ ठीक है. That's how I Argument, heard. that's their argument. अभी सुनिए आगे. Very well. क्या लिखा? Case in Naeem Ahmed are different. It has come on record that prosecutrix therein was a married woman having 3 children, and under those facts and circumstances, Honorable Supreme Court noted a fact that the appellant could not have been that prosecutrix could not have been under the misconception of fact while giving consent to have sexual relationship with the appellant. Full stop. Honorable Supreme Court specifically noted a fact that prosecutrix, being a married woman and the mother of 3 children, was matured and intelligent enough to understand the significance and the consequences of the moral or immoral quality of act she was consenting to. Full stop. However, in the present case, though Shri Ajay Gupta submits that prosecutrix knew from the beginning that he was married, but from the statements given by the prosecutrix under section 164, this fact
is not corroborated. Full stop. It has come in the statement itself that आपने पढ़ा था ना शायद. You read that statement 164 का पढ़िएगा दोबारा. मैं उसकी बातों में आ गई, जिसका फायदा उठाकर उसने 2016 में मेरे साथ पहले हनुमानगंज थाने के जस्ट सामने स्थित होटल भोपाल पैलेस में बुलाया। वहां भी मुझे अपनी बातों में फंसाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद मनीष यादव ने मेरे साथ कई बार संबंध बनाए। मैं 4 माह की गर्भवती हो गई। उस समय मेरा बच्चा ट्यूब में फंस गया था, तो डॉक्टर को मेरा ऑपरेशन करना पड़ा था। उसके बाद करीब 4-5 साल पहले मेरे मम्मी पापा ने करौन पर दांगी कॉलोनी में अपना खुद का घर बनाया और हम वहीं रहने लगे, और मनीष यादव का भी आना जाना होने लगा। हमारे संबंध यहाँ भी बने। इसके आगे मतलब इसी वर्ष 2023 के वैलेंटाइन डे के बाद मैं गर्भवती हो गई, जिसके बारे में मुझे फरवरी माह में ज्ञात हुआ। मैंने फरवरी में ही मनीष यादव को बताया था कि मैं गर्भवती हूँ और हमें शादी कर लेनी चाहिए। इस बात को लेकर मनीष यादव ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम्हारा धर्म अलग है और मेरा धर्म अलग है। मैं हिंदू हूँ, तुम मुस्लिम हो। जब मैंने उससे कहा कि आपने कहा कि आप मुझसे शादी करोगे, तो इसी बात पर मेरे साथ मारपीट करने लगे। इसके बाद मनीष यादव ने मुझे डराया धमकाया कि बच्चा गिरा दो, तो मैंने मनीष यादव के डर से बच्चा गिरा दिया। मनीष यादव करौन थाने में पोस्टेड थे और मुझे पुलिस का डर दिखाते थे, इसलिए मैंने डर के कारण अपना बच्चा गिरा दिया। इसके बाद मनीष यादव के भाई योगेश ने मुझे धमकी दी कि तुम मेरे भाई का पीछा छोड़ दो, नहीं छोड़ा तो तुम्हें जान से मारकर खत्म कर दूंगा। इसके बाद भी लगातार मुझे डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं कि यदि रिपोर्ट लिखाई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मनीष यादव ने मेरे साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, मेरे साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी, मुझ पर डीएनसी करने का दबाव बनाया, जिसके कारण मुझे अपना बच्चा गिराना पड़ा। नहीं, एप्लीकेंट कब से मैरिड है? एप्लीकेंट मैरिड है, ये उसको कब मालूम पड़ा, ये बता दीजिए बस पढ़ के 164 में से। तो मनीष शुरू में आया, आपने पढ़ा था कि उसको शुरू से मालूम पड़ गया था? देखेंगे आप पैरा टू में पढ़ा था मैंने। पढ़िए. पैरा टू में पढ़ा था मैंने, 1 में मालूम। इसके बाद हमारी फोन पे बातचीत होने लगी। कुछ महीनों बाद मनीष यादव ने मुझसे बोला तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूंगा। तब मुझे पता था कि मनीष यादव शादीशुदा है। तो शुरू से मालूम? मैंने उसको बोला कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा। It's a matter of investigation, and for the present, no, it is not a case to show indulgence in the matter of grant of anticipatory bail. Application fails and is